wonderful moderation and panel discussion. It was actually a revelation, and I've been taking notes, as you can see here, because it's a very different meeting. It's one of my first that I've come to a patient advocacy, so kudos to Lung Connect, and huge regard to everyone who's representing. I'll just give a quick background, and that way I can then set the stage for what I'm going to say. So I'm a Bihari from Patna, married to a Maharashtrian. That's why the Limai. I want to mention this because I have a huge Eastern India angle into approach to cancer, and I want to bring that front and center. 20 years of my life, I lived in the US. So directly from med school, I did my medicine from Bhagalpur University, and I went to, from then on to New York University, then on for fellowship to Albert Einstein University, New York, and then as a faculty at Harvard University, and as a faculty at Columbia University before coming back. I was at Kokilaben for 6 years, and now I'm heading the medical oncology division and the research division in oncology at a corporate center, Sir H.N. Reliant Foundation Hospital. I work for Shri Mukesh Ambani. My approach to cancer has been through very different lenses. I actually woke up into oncology and management of cancer through Sloan Kettering Cancer Center. I was an intern and I got to rotate at Sloan Kettering Cancer Center. So I've actually been introduced to cancer and cancer therapies through the lenses of research. My first exposure into cancer management has been with protocols, retrospective data collection that I did as a student for cancer patients. It was a research project that I got to know cancer therapies from. And my eye-opening was with drugs that could actually be magical in the face of death and dying. So the first project that I ever did was on HER2 positive breast cancer. A type of breast cancer that was responsible for very high rates of mortality. When you're faced with death and dying, and we heard so much on patients and caregivers here, how we connect cancer with death. And especially 3/4 of our cancers present in advanced stages where death is imminent and the clock starts ticking backwards. We heard that. In wake of that, when you have a biomarker with which you can change the fate of the disease, it is a wake-up call for the society, for the patients, for the caregivers, everyone to seek that drug. You have to go ahead and seek that drug. How do you seek that drug? A lot of this cannot happen in routine, is unaffordable, cannot be delivered to the masses, as Ravi Prakash ji just said, and I veto that, I vote for that, I completely support that, and more power to that thought process, where I think we have to wake up and try to bring these pathways to the masses. Just by talking about research that happens in a tertiary care center, it does not fulfill our responsibility. So that's the background. I have been a lifelong clinical trialist. So here at Kokilaben Hospital also I set up a clinical trial center, one of the first large clinical trial centers in a corporate, because I can't let go of that side of me. Why clinical trials? So as I have been communicating with Lung Connect and Mr. Sanjeev Sharma, and congratulations for Lung Connect, he has always said, ma'am, trial mat boliye. ट्रायल का नाम मत बोलिए. ट्रायल बोलने से मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, तो ट्रायल बदल देते हैं. सो आई completely understand where he's coming from. But what is the reality? These are trials. These are trials all across the world. So what is the positive of the trial? That's why the mention of Bihar, that I belong to a state where there is huge representation of cancer patients and needs, diminished needs. Dr. Amit just spoke, and I know how it is. So when we look at novel drug development, access to cancer care, all of that
is possible through clinical trials. All we need to do is we need to set up proper clinical trial centers all across the country. Why that? Because the drugs that are coming as novel drug development, the new drugs that are coming into oncology, and I didn't mention, I've worked as an early drug development person in Harvard University. That was one of my faculty positions out of the dual faculty position I had. What does that mean? First in human trials. So ये drugs जब पहले phase 1 में test होंगे, आज already बहुत information है इन drugs के बारे में, that they may work in that patient, that they may be magical in that patient. And lung cancer is one disease where I've learned this front and center. We say lung cancer is the poster child for precision oncology, where we figured out that this is the biomarker, और ये दवा दो और disease पूरा melt हो जाएगा, change हो जाएगा, सालों चलेगा. विवेक तोमर साहब बताएंगे अभी आगे अपना experience and his journey is about that. So I completely support that thought process. But how do you make that drug available to the patient who can't afford, who doesn't have access to these medicines? अगर हम wait करेंगे कि ये दवा market में आ जाए तो हम खरीद के खाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे. Drug development में इतना time लगता है. So we cannot wait for the drugs to mature and come into the market. We have to get them when they are developing. So it's not just the responsibility of the systems. We have to make more mandirs. It's not just the responsibility of the systems. I think it is also the responsibility of patient advocacy. We have to spread awareness. We have to wake up and say, we want it. The consumer wants it. And how do you get it? You get it by buying. You get it by compassionate drug access. You get it by clinical trials being in the country. Last point. Clinical trials worldwide are being funded by pharma. Each month that a clinical trial runs globally is billions of dollars. Pharma runs these trials in developed countries with 10%, only 10% of seats filled. Their trials are running months after months, years after years without getting filled because access is easily available. Access to cancer care is easily available in the West. So these seats are going unfilled. 90% of the seats in clinical trials in the West go unfilled. For us, these trials are access to cancer care, access to novel drugs, access to the right kind of drugs before they come in the market in tier 2, tier 3 cities in the roots of India. Making these drugs available early on to these patients who may not survive to see the drug in the market, not be able to buy the drugs when they come in the market. And that's where we have to make the connect. These trials are up and running in the West. They have to be brought to where the need is. How can we do that? By being open to bringing the right kind of clinical trials to India and by running them ethically. That's the most critical point. We have to make a responsible pitch in here. We have to run the clinical trials with transparency, with full ownership and responsibility, so that anyone who wishes to look in to see whether we did the right kind of work, we stand on credibility, and that's how we'll be able to bring the West, the pharma companies that are wasting away billions of dollars and our patients are going unfunded without care. It has to be a match game. So that's the 2 cents that I had to share with my experience. But, truly commendable this effort and a huge respect, and thank you for making me a part of it. I have a doctor who's worked in clinical trials and research and everything, and I have a caregiver who is doing all that he can for research and to get the right medicines for the patients. I have a little different take on the whole thing. I think research is important because unless research happens, we won't be able to get newer drugs which can be done. It takes time, I understand that,
but at the same time, we need to be constantly working towards the betterment of our patients by producing good drugs. But my issue is that, whenever these clinical trials are done, they are mostly done abroad. Most of them are not in India at all or in our continent. With the result, our population is really not, put on the trials. So whatever medicines we are giving to the patients is something which is coming because of the benefits that it has seen in the Western countries. So is it fair? That's my question. The second thing is that most of the trials are not, they don't include people who are elderly. So if the elderly are not included, and then once the drug is used for the trials, is it fair to give it to the people who have not even been included in the first place? So that's my second thing. The third thing is that, when she mentioned about ethics, being in the ethics committee of various hospitals and organizations, I know that it is kind of difficult for the people who are sitting on the ethics committee to really get it down to the level of a patient. How much does the patient understand of the trial that he is going to be put into? How much time is spent to explain things to him? How much is he open to talk about whatever he is going through? And during, they say that the person who's doing the trial is going to be responsible and he will be there available and all that. But there are lay people in the ethics committee, and those lay people are never involved in getting the results from whatever is happening. So that is again another lacuna that is happening. And so if I focus on only these three lacunas and think that something can be done about it, I think that will be a great thing. Of course, the cost part is there. It's very expensive. We know that there are certain things which are, like certain access programs which are running, which can help the patients. But it's just like one person like Vivek can't do that. Vivek needs help. Vivek needs to train all of us. I think it's very, very important. We all think we can do the advocacy, but I don't think it's that easy, because what Vivek does and how he has been able to get the medicines to the country, how he has been able to get the cost reduced and all that is a lot of effort. So I personally think that Vivek should hold like a training program, maybe in a forum like this or otherwise, to help us all out with learning on how to do things properly and correctly, and help him with doing all those things. Thank you. Thank you. मैं खड़ा होके बोलता हूँ, देखूंगा अभी। नहीं, अभी इम्पोर्टेंट हो गया। जब तक मेरी वाइफ थी वो तैयार करके भेजती थी, फिर फोटो चेक करती थी। अभी मेरा बेटा है, वो तैयार करके भेजता है, फोटो चेक करके देखता है कि कैसा लग रहा था, तो प्लीज़ अच्छे से लेना फोटो। So thank you for your kind words. This I do in my volunteer work, जितना कर पाता हूँ बहुत ज़रूरी है। जब मेरी वाइफ चली गई थी, she is no more, and I was in 6 months like deep depression, or I don't know I was where. तो मेरा 10 साल का बेटा मेरे पास आया था, और मेरी वाइफ को लंग कैंसर जब हुआ था, जब कोई एक भी टारगेटेड थेरेपी वर्ल्ड में नहीं थी, तो 6 months में she was in coma, and she participated in 7 clinical trials, and at her time she was the longest survivor of lung cancer stage 4 in Asia, non metastatic to ovaries, adnexia, abdomen, brain, bone, whatever you can. So yeah, that's the message. Yeah, so I brought lot of trials in India, and so मेरा बेटे ने मुझे आके बोला कि तो मेरी वाइफ का नाम कुसुम है होता, तो उसमें कुसुम मम्मी को अगर आप 6 महीने से 6 साल कोर्स कर पाए तो बहुत सारी कुसुम अभी हैं, आप उठें। तो दैट्स वाई माई जर्नी स्टिल कंटिन्यूज अभी उसमें। तो राइट नाउ आई एम, ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली कास्ट प्रोफेशन में होता है, घर चलाने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है, बट आई एम डूइंग एवरीथिंग व्हाट इज फॉर दी lung cancer, but as well as general research, because research saves lives, and I'm giving you a couple of examples right away. I am now part of advisory board of Government of India, DBT, lot of pharma companies, NGOs, and also in our group, जो हमने इंडिया में पहला ओंकोजिन फोकस ग्रुप था एल्क लंग कैंसर का, हमने ग्लोबली 85 कंट्रीज में है, और हमने खुद से पैसे इकट्ठा करके 3 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किए हैं,
जो पेशेंट फंडेड हैं जी, और तीनों दो वैक्सीन है, पहली बार जो एल्क के लिए वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं। तो होगी नहीं होगी, बट वी आर एंड वी हैव यू नो दैट्स एज ए सेड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस कि इट्स नॉट clinical trial which are killing patients. Patients are dying because they are not having the access of the clinical trials, because जब तक आपको पास access नहीं होगा आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप में से कोविड वैक्सीन कितने लोगों ने लगवाई? इफ यू कैन रेज योर हैंड्स प्लीज। इसलिए लगी आपको वैक्सीन क्योंकि इंडिया में रिसर्च हुई वैक्सीन की और आपको लगी। कोंगो में, सूडान में 10% से कम लोग हैं जिनको केवल 1 डोज लगी है, सेकंड डोज तो आप भूल जाइए। नाउ दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को पकड़ के रहना कि आपको सबको वैक्सीन लगी है और उनको 10% से कम लगी है। अब हम कैंसर की बात करते हैं, ठीक है। 2020 में मई में 7 मेडिसिन अप्रूव हुई थी लंग कैंसर की, 1 मंथ में, रिकॉर्ड मंथ है, एक भी आज तक इंडिया में नहीं है, ठीक है। उसके बाद से अब तक 20 मेडिसिन और पिछले 4 साल में अप्रूव हुई हैं, उनमें से 30% इंडिया में है। और अगर हम ऑस्मेटिक की बात करें, लोलाटिन की बात करें, हमें 10-10 पेशेंट के लिए फंडिंग मांगनी पड़ती है। साहब जनाब, बात तो ये है कि टाटा हॉस्पिटल तो 1% पेशेंट भी नहीं लेता है होल इंडिया के। द वर्ल्ड इज आउटसाइड ऑफ टाटा हॉस्पिटल, दिल्ली है, बिहार है, हर जगह है ना। तो अब 20 पेशेंट से क्या क्या कर पाएंगे? सो नाउ द पेशेंट्स हु आर इन यूएस और कनाडा और इवन सिंगापुर और यूरोप, दे आर टॉकिंग विद मी, ठीक है, ये 3rd जनरेशन की सेकंड मेडिसिन काम कर रही है, बट वी कुड गो द 3rd जनरेशन, 4th मेडिसिन, दे आर लाइक चूजिंग बिटवीन दस। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम किसी की जिंदगी बचाने के लिए क्या 20 पेशेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और रीजन ये है क्योंकि रिसर्च इंडिया में नहीं हुई है। अगर कोविड की तरह ये दवाइयाँ भी यहाँ बननी होती तो हम भी हाथ खड़े कर रहे होते कि सब रिसर्च हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है, कुछ डॉक्टर कुछ पेशेंट भी हैं। आप लोगों में से किसी ने सेरेटिनिब लिखी हो या खाई हो, ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा करें पेशेंट्स को। आप लोगों में से किसी ने एलेक्टिनिब लिखी हो या खाई हो, ठीक है। इन दोनों ही केस में मेरी वाइफ फर्स्ट पेशेंट थी इंडिया की, दोनों ट्रायल, और वो ट्रायल इंडिया में थे नहीं, ना आ रहे थे। एंड आई रिमेंबर आई लेफ्ट माई जॉब और आई एम ए सिंगल कंट्रीब्यूटर, ब्रेड अर्नर, पर घर में बेटा था 3 साल का, उसको क्या पता था कि मम्मा को कहाँ छोड़ के आया हूँ। आई हैव टू फाइट, और लोग जुड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। पेशेंट एडवोकेसी इज टफ बट देयर आर आंसर। मुझे याद है मैं उस टाइम पहली बार डॉक्टर परमेश से मिला था, एनडीटीवी ने मेरे लिए प्रोग्राम किया, जी न्यूज़, बिल्कुल एनडीटीवी वर्क और जी न्यूज़ अलग है, जी न्यूज़ ने हमारे लिए प्रोग्राम किया। हिंदू आया और लोग जुड़ते चले गए, आप जैसे बहुत लोग जुड़ते चले गए। रोश ने भी अपना इंस्टेंस बदला, नोवार्टिस ने भी, प्रभात जी थे उस टाइम पे, और दोनों ट्रायल हम इंडिया में लेके आए। 3-3, 4-4 महीने लगे। ओब्वियसली कुसुम जब तक पैरालिसिस हो गया, तो और पैरालिसिस होके लिटरली पैरालिसिस था, बिकॉज उसको 38 मैट्स थे ब्रेन में, बहुत चुके थे, सब ट्रीटमेंट फेल हो गए थे, WBR भी कंप्लीट होके फेल हो चुका था, एंड शी वाज पैरालिसिस। देन वी गॉट रोश गए और सब सपोर्ट हुआ, क्लिनिकल ट्रायल आया, फर्स्ट पेशेंट बनी सेरेटिनिब में, राजीव गांधी में फर्स्ट पेशेंट बनी, एंड आफ्टर 9 months शी वाज रनिंग इन ए मैराथन। पैरालिसिस के 9 महीने बाद में शी वाज रनिंग इन ए मैराथन, पे मिनस होती है। और मैं सोशल मीडिया पे राइज टू सर्वाइव कैंसर के नाम से हूँ, मतलब खड़े हुई है, सर्वाइव करना है तो, ठीक है। और आप मेरे कभी ब्लॉग पे जाएंगे तो वहाँ कुसुम का एक फ़ोटो है जिस पे उसने लिखा हुआ है कि वो उस दिन रनिंग का फोटो है, उसने मैराथन रन करी थी 9 महीने बाद में, आफ्टर दैट रिसर्च मेडिसिन पैरालिसिस के, इस पे लिखा हुआ था, आई एम सर्वाइविंग 5 years बिकॉज ऑफ, एज एवरीवन से, होप बट रिसर्च एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट। तो माई पॉइंट इज रिसर्च इज लाइफ, एंड अगर हमें इन 25 पेशेंट से हम 25 की ज़िंदगी बचा देंगे, अब विश्वास मानिए हम में से कोई भी इम्यून नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कोई भी इम्यून नहीं है। अगर डॉक्टर पाटिल के अनफॉर्चुनेट या किसी के भी घर में ऐसा कुछ हो गया ना, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इन मेडिसिन को, 4 महीने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपनी जनरेशन को बचाना है, आगे वाली जनरेशन को बचाना है, तो हम सब लोगों को मिलकर ये चेंज करना होगा कि चाहे वो फार्मा ट्रायल हो, चाहे वो एकेडमिक ट्रायल हो। और ख़ास बात यह है कि इंडिया में ना हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, 2 चीज़ें एक्चुअली। एक तो पॉपुलेशन, हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ रेयर नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ रेयर नहीं है, कोई रेयर डिजीज रेयर नहीं है इंडिया में। अब एल्क को रेयर बोलते, ठीक है, वो भी रेयर नहीं है। इतने पेशेंट, इतने पूरे यूएस में, इतने तो मैं एक स्टेट में निकाल के दिया, तो मेरे ग्रुप में इतने हैं,
ठीक है। और दूसरे हमारे यहाँ पे स्किल्स है, आप देख लो ना, डॉक्टर साहब वहाँ से यूएस से आए हैं। अब अभी मैंने क्रास का एक ट्रायल था, क्रास के इंडिया में मेडिसिन नहीं है, तो उनके पीआई भी इंडियन है यूएस में। मैंने यहाँ से पेशेंट भेजा, 3 महीने से पेशेंट के टीचर हैं, बट दे आर सर्वाइविंग, वरना वो चले जाते हैं। द पॉइंट इज कि हमारे पास स्किल भी है, पॉपुलेशन भी है। लेट्स एंश्योर कि दुनिया का चाहे फार्मा ट्रायल हो, चाहे एकेडमिक ट्रायल हो, चाहे पेशेंट ओरिएंटेड ट्रायल हो, चाहे हॉस्पिटल ओरिएंटेड हो, हर ट्रायल हो, ट्रायल इज ओके। और ट्रायल में इतना ही रिस्क है आज के टाइम में। और मैं, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल जनरेशन एज ए पेशेंट एडवोकेट, आई कैन टेल यू इतना ही रिस्क है जितना फ्लाइट में जा रहे हैं और मर जाएंगे गिर के, ठीक है। क्योंकि इतनी स्टडी होती है, इनकी डॉक्टर्स की पीआई की जान यहाँ पे अटकी होती है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। डरते हैं, इतने रूल्स हैं। और 2019 में जो रूल आए हैं क्लिनिकल ट्रायल, उनके ड्राफ्ट कमेटी में इन कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि हमने कितने स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं। अगर बचाना है अपने आप को, आने वाली जनरेशन को, तो रिसर्च लानी पड़ेगी एंड वी हैव टू। सो थैंक यू। थैंक यू। ये बहुत पैशनेटली आप तीनों ने बात किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल, बट एंड वी आर रनिंग लिटिल लेट, तो 5 मिनट ऑल आई विल टेक। आई जस्ट वांट टू आस्क ईच ऑफ यू one question. Vivek ji, you have personal experience, therefore you are so passionate. We are so passionate about research. We really truly believe that this is the only way that we can improve patients' outcomes. But this is not the common viewpoint of most patients. I'll tell you, yesterday in the OPD, I was trying to counsel a patient who has failed first line, second line treatment of lung cancer. We have a trial of immunotherapy. He said no, हमें पार्ट नहीं लेना है, हमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेना है. I told him आपके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, the response rate will be less than 10%, maybe 5% response rate होगा. He said हमें वही चाहिए. I said आपको free of cost immunotherapy मिल जाएगा. He said ये आप कह रहे हैं ट्रायल है, I do not want to take part. And this is common. Every day these patients feel this. And we heard earlier also कि for publication या for whatever जो ये हम clinical trials कहते हैं, how can we change that attitude? How do we convince people? How do we change? And this is not the attitude in other countries. And this is why other country patients benefit and our patients are not benefiting. So Vivek ji, Vandana ji, Sevanti ji. Quick points, and it is very true, very true. And रवि जी की सपोर्ट चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा रोल तो पहले मीडिया का है. मतलब गिनी पिग बना दिया, मुझे याद है. और आप विश्वास मानेंगे, ये ना पेशेंट एडवोकेसी आसान नहीं होता है कहना, मतलब नॉन खाली में, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, इतनी गालियां पड़ती हैं. मुझे बोला गया कि आपकी बीवी ने स्मोकिंग की होगी, स्मोकर. स्टिग्मा की बात कर, भैया स्टिग्मा है, लंग कैंसर पे इतना गंदा स्टिग्मा है, लिटरली इतनी गंदी गालियां, झूठ बोल रहे, तुमने स्मोकिंग की हो, तुम्हारे माँ बाप ने की होगा, उसने किया होगा, स्टिग्मा भी है. और क्लिनिकल ट्रायल पर तो मीडिया बैठी थी सामने और हम प्रोग्राम कर रहे थे. सर मेदांता से कोई डॉक्टर थे अभी, हाँ मेदांता भी था 3-4 साल पहले, मीडिया बैठा हुआ था और उन्होंने पूछा कि कैसा रहा आपका गिनी पिग एक्सपीरियंस, कुसुम से पूछा. तो कुसुम ने एक बात बोली थी कि अगर गिनी पिग होने के बाद में मैं 6 साल हो गए तो इस टाइम उसको 6 साल बाद यहाँ बैठी हूँ, तो आई एम प्राउड टू बी ए गिनी पिग. ठीक है, तो पहली बात तो ये है. दूसरा मैम, आपका जो ये आंसर है ना, आई थिंक इट इज अबाउट कम्युनिकेशन. जो लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेशन सब कुछ इस बात पे है. क्योंकि आप जहाँ बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत संजीवनी से ये बात बोली, ट्रायल वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो लोगों के अंदर डर है. पर अगर पेशेंट एडवोकेट की बात करूं, मेरे पास पर डे मेरी ईमेल आईडी पे 50 से 60 ईमेल आते हैं सिर्फ सिंगल क्वेरी के कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कहाँ से मिलेगा, कि वो हमारे एक्सपीरियंस से, पेशेंट के एक्सपीरियंस सुन रहे हैं. आज के टाइम में जितने भी टाटा हॉस्पिटल एनजीओज हैं, अगर वो इस बात को भी हेल्प करना स्टार्ट कर दे कि क्लिनिकल ट्रायल के क्या फ़ायदे हैं, और ट्रायल में इस फ्लाइट जितना ही रिस्क है, और इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, जो जैसे मैं अपनी जगह कर रहा हूँ, जो जिसने मुझे सुना वो मेरी वीडियो देख के पूछ रहा है. और डॉक्टर्स, आई नो यू हैव लिमिटेशन कि आप यू कांट गिव ओवर हाइप थिंग, बट यूजिंग द राइट वर्ड एंड कनेक्ट एंड गेटिंग दिस सिस्टम एटलीस्ट इन द टाटा हॉस्पिटल, एंड जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है. तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज की, बिकॉज फ्रॉम वेयर आई सी इज, जहाँ पे जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, दे आर आस्किंग क्लिनिकल ट्रायल क्या है. मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि आप अभी कह रहे हैं पेशेंट नहीं है, और फार्मा कंपनी के पास जा रहा हूँ कि हमारे तो सब डॉक्टर साहब वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं. तो हर कोई जाना चाहता है, पर कहीं ना कहीं गैप है, और जहाँ गैप होता है ना, गैप होता है, दैट इज कम्युनिकेशन गैप. सो वी हैव टू डेवलप ए लैंग्वेज सिस्टम टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट इट कैन चेंज. No, and I agree. I think as a clinician and as a doctor, there is there is something to gain. So it has to come from patients and patient advocacy and the community. I think if that can change,
Vandana ji, I will ask you next, but first I want to ask Sevanthi, what is your experience and how can we change this Advocacy. advocacy? I think that is the word on the wall. It is patient advocacy. What I say, I have a conflict, right? I am the PI or the co-investigator on the trial. I'm sitting on the other side. The minute you are on the other side of the table, it's a different story altogether. It is someone who is on the same side of the table that has to speak. That's where I feel it is very powerful. The voice of the patient, the caregiver, it's a camaraderie, and that is what needs to be put up. Consumer is king. Consumer wants to live. That's what we have to really enhance, and these trials are directly involved with enhancing survival. We have to project that. Absolutely agree. And Vandana ji, I think from NGO point of view and all of you, whenever, and it is changing now, but whenever an NGO comes to us, the money is always for patient care, for medicine. If we say for research, it's usually no to start with. How can we change that, and do you think we should change that? But I thought research में तो बहुत पैसे हैं ना, तो इसलिए Oh, madam, कहाँ? आज बिल Sevanthi, what is your answer to this? Research में बहुत पैसा है. मैम 2 तरह के का रिसर्च है. तो मैं यहाँ आई तो मेरे को पैसे नहीं मिल रहे थे. बिल्कुल कॉर्पोरेट में कोई क्यों पैसा देगा मुझे रिसर्च करने के लिए. तो सबसे पहले क्या किया कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट किया, क्लिनिकल ट्रायल सेंटर बनाया, फार्मा के ट्रायल्स लाए, कॉर्पोरेट को बताया आपको पैसे मिलेंगे, आप पैसे अर्न करोगे इससे, ये आप फ्री का नहीं कर रहे हो, जस्ट फैसिलिटेट करो सो दैट द पेशेंट्स कैन पार्टिसिपेट. यहाँ आपको एक पैसा भी पॉकेट से नहीं लग रहा है, योर हॉस्पिटल इज गोइंग टू अर्न मनी. नाउ कमिंग टू द रिसर्च दैट could be funded by NGOs or should be funded by the masses. These are our own research efforts. Like Dr. Vijay Patil said, you know, clinical research for the people, by the people. That kind of research that is applicable to Indian patients, low-cost strategies that we can bring. I always say, India will bring its own answer to the world. It will set an example. For that kind of research, we money. really There's no money. seek your funding. Let me add on to this that, you know, what happens is that the common notion that everybody has is that research is pharma funded. So if there's a patient who's on research or a clinical trial, then everything is going to be taken care of by the pharma. So I think this has to be first clarified to anybody who's helping out, that you also need money for doing investigative research. So once people know about it, then things will change. Because most people think, you know, any clinical trial supported by pharma, why do you need to pay for that patient? So then the choice is, there's a patient who can recover, so help that patient rather than not knowing what, you know, what, that the research is not being funded by the pharma. So that clarity has to be brought in and explained to the you know, likes of us, so that we can help out patients and help you in the process. And I think there has to be, like Vivek said, कि communication is the key. चाहे वो आपके और हमारे बीच में हो, चाहे वो हमारे और पेशेंट्स के बीच में हो, और चाहे वो आपके और पेशेंट्स के बीच में हो. द फैक्ट कि आज के दिन भी बहुत लोग ये समझते हैं, मतलब अब मैं इतने साल से ये काम कर रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि हर रिसर्च में ऐसा नहीं है कि फंडिंग वहाँ से आ जाएगी और हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी और उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको नहीं मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम होगा तो किसकी कमी है? आपने बताने की कोशिश शायद नहीं की होगी, या आपने उतना समय नहीं दिया होगा ये बताने के. So naturally the problem comes in. Similarly, like you said, you know, patients don't agree because you say clinical trial. Why do you use the word trial or new medicine or something? It can be said in a very different manner, explaining to them that you can, you know, help probably in getting something for other patients too. So it's how you put the whole thing to the patient that it makes a difference. I think communication is absolutely the right word for it, that there has to be time spent. ऐसे टेबल पे बैठ के बात नहीं हो सकती है. हर पेशेंट के साथ पेशेंट एडवोकेट्स को भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी करना पड़ेगा और आपस में भी, तभी कुछ काम आगे बढ़ेगा. ठीक है. So I will take this opportunity to say कि
in investigator-initiated research in India, पैसे की बहुत कमी है. We do not get funding, zero funding. And all, Dr. Patil will support me here, all investigator-initiated research that is done on our free time. We do because we get nothing out of this. We do it after hours, taking away our time from our family, taking away our time from anything else. It's mostly done at midnight, 1 o'clock, 2 o'clock, you can see. And it is impossible to get money because there is no awareness. So, ma'am, I'm saying it, there is no money. We need money. And we try. So, so we can ask. So, ये किसी को पता था कि we need money for research or nobody knew this? Yes. नहीं. Let everybody put up their hand peacefully. If I can speak from the NGO point of view, I think everyone knows why there is so much hesitation for NGOs to get involved in this. It's because of something that happened with this cervical cancer vaccine. Yeah, that was the time when the baby was thrown out with the bath water. So that is where the situation stands today. I think most NGOs would not support, as an NGO to do that. As an individual, I can. And as a, when we supported clinical trials for imatinib mesylate, the way that we helped was to give that patient money for a ticket to go to the US and participate. Right. We could not say, take Gleevec or take imatinib mesylate. When they went to the generic, today also we cannot say, take the generic, don't take Gleevec. It has to be, as an NGO, we are responsible in the long term, and we have to say whatever the doctor has said, do that. We are not medically qualified, and maybe we are not the right people to be talking to as far as clinical trials are concerned. Okay, agreed. So I think Sanjeev ji